Good morning, students. My name is SUVAS VORA, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So, in the last lectures, we were start the new chapter, chapter number 8, and the discussions in the chapter number 8 for the last lecture is the various generator fault and abnormal conditions. So, in order to avoid the unexpected breakdowns and costly repairs and the subsequent loss of due to motor drawing, and it is important that the motor is fitted with the some sort of the protection devices. You can see here the how to induction motor runs of between the two magnets. The coil will be rotated. So how it's possible? So generally there are the two types of protections are provided to the motor: overloading protections and short circuit protections. So in the overloading protections, how the overloading works? So first of all, overloading means कि जब हम एप्लीकेशंस के हिसाब से मोटर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, जैसे कि जहाँ पे 10 HP की मोटर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम सिर्फ 8 HP की मोटर यूज़ करें तो ओवरलोडिंग कंडीशंस होता है. अदरवाइज इन द इनिशियल लेवल ऑफ द मोटर्स, जब मोटर स्टार्ट होती है तब 1.5 टाइम्स मोर देन कंज्यूम द मोर पावर. सो इनिशियल लेवल पे जब मोटर स्टार्ट होती है तब ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है और उसकी वजह से ओवरलोडिंग कंडीशंस अराइज होती है. सो इट मस्ट बी रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दिस फॉल्ट. देन आफ्टर द शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन. अब शॉर्ट सर्किट की बात करें तो जनरली शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शंस इंटरनल होती है. जब दो फेस शॉर्ट सर्किट हो जाए या फेस टू अर्थ फॉल्ट हो जाए, सो उस वो भी इंटरनल प्रोटेक्शंस की रिक्वायर रहती है. तो किस तरह से होता है? चलिए जब शॉर्ट सर्किट करते हैं तो शॉर्ट कंडेंसर हम सेंसर रहते हैं या कि शॉर्ट कंडीशन होता है टेम्परेचर जाए अगर कोई वहां पे एक टाइम बढ़ गया तो ऑटो क्लीनर रेटा और सब रह जा ऑटो होगा तो त्यादा ही प्रोटेक्ट पॉजिटिव हमने फिक्स ना करने से इट्स ऑफ मिनट्स. सो हमने आता पर प्रोटेक्शन ऑफ सॉकेट द फॉल्ट से स्टेम बेल प्लट से ऑल रिले के हमने था कि इस से इधर फिर तो होटल ट्रक करे टिपर एंड इट इज इन द लाइन ऑफ द लेफ्ट फ्यूचर इज अर्बन एंड सिंगल मोर देन व्यू कंस्ट्रेट ट्रेडर कनेक्ट डाउन. देन उससे दो मेन पॉसिबिलिटी है. अगर मैं रिमेनिंग फेज वाइंडिंग की बात करूँ तो स्टेटर वाइंडिंग फेल हो जाएगा, और रोटर हीटिंग की बात करूँ तो रोटर बार हीटिंग होगा एंड शाफ्ट बेरिंग लुब्रिकेशंस ओवर हीटिंग होगा. रोटर में क्या होगा कि स्टेटर इंडक्शंस करंट हाई हो जाएगा एंड द बेरिंग फेलियर हो जाएगा. देन आफ्टर द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ द अनबैलेंस वोल्टेज, तो उसमें भी अगर यूटिलिटी की सिस्टम की बात करें तो अनबैलेंस इनकम लाइन, देन रिड्यूस द यूसेज ऑफ ट्रांसपोजिशंस इन द हाई वोल्टेज, देन प्राइमरी ओपन डेल्टा ट्रांसफॉर्मर बैंक. एंड प्लांट की बात करें तो लार्ज सिंगल फेज लोड, अनबैलेंस 3 फेज लोड, अनसिक्वेंस कंडक्टर, ब्लो फ्यूज एंड प्लांट एक्सपेंशंस. और इफेक्ट की बात करें तो वोल्टेज विल बी अनबैलेंस्ड ड्यू टू दी नेगेटिव सीक्वेंस इफेक्ट. सो उसमें भी स्टेटर हीटिंग हो जाएगा और स्टेटर वाइंडिंग फेल हो जाएगा. अगर रोटर की बात करें तो रोटर हीटिंग होगा, रोटर बार फेलियर यानी कि लूज बार हो जाएगा एंड द शाफ्ट बेरिंग लुब्रिकेशंस आल्सो हीटेड एंड द फेलियर ऑफ द रोटर एंड स्टेटर वाइंडिंग्स. देन आफ्टर द कॉजेज एंड द इफेक्ट ऑफ ओवरलोडिंग. सो ओवरलोडिंग में वोल्टेज लो ऑन द इनकमिंग लाइन एंड द प्लांट सिस्टम की बात करें तो एक्सेसिव सीलिंग cycling and the pulsating loads, continuous overloading, prolonged accelerations, time, motor load, and repeat starting and repeated stalling. और उन दोनों की वजह से स्टेटर वाइंडिंग एंड रोटर वाइंडिंग दोनों डैमेज हो जाएंगे यानी कि फेल हो जाएगा. यानी कि ये जो हमने 3 देखा तो 33% फेलियर ड्यू टू दिस 3 रीजन्स की वजह से है. Then after the protection of the low voltage system, so electrical motors, electrical motor are designed to
operate within the certain voltage range, and any vibrations of the voltage that is outside this range will cause the problem that will shorten the life of the motors. यानी कि लो वोल्टेज की वजह से मोटर ज़्यादा करंट कंज्यूम करना स्टार्ट करता है और उसकी वजह से बहुत बड़ा फेलियर हो जाता है. सो लो वोल्टेज की बात करें, सो लो वोल्टेज कॉज द मोटर हैव टू हायर करंट कंजप्शंस इन ऑर्डर टू द हैंडल द सेम लोड, एंड ओवर टाइम दिस डैमेज द मोटर एंड ऑल्सो कॉजेज द स्टार्टिंग करंट टू बी हायर. देन आफ्टर हमने देखा था द एक्सप्लेनेशंस ऑफ दिस फिगर. यू कैन सी द सिंगल लाइन डायग्राम, फ्यूज, देन आफ्टर स्विच, contactors and induction motors. So how it actually in circuit diagram, so see in the figure 1, see in the figure A. So RYB, the fuse will be connected, switch will be connected, and switch is also connected with the auxiliary contact and the thermal overload relay. अब क्या होगा कि जनरली स्विच क्लोज होगी जब ओवरलोडिंग यानी कि लो वोल्टेज होगा तो उसकी वजह से ज़्यादा करंट कंज्यूम करेंगे, और ज़्यादा करंट कंज्यूम करने की वजह से इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो थर्मल ओवरलोडिंग रिले है वो सेंस करेगा, एंड देन आफ्टर जो बटन ऑफ है, नॉर्मली जो ऑफ है, उसकी वजह से कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हो जाएगा एंड द ऑक्सिलरी विल कॉन्टेक्ट विल बी ओपन. सो दिस आर द बेसिक कंस्ट्रक्शंस फॉर द लो वोल्टेज सिस्टम. देन आफ्टर द ओवरलोड प्रोटेक्शन के हमने देखा था. सो वी नो दैट कि इनिशियल कंडीशंस में मोटर 1.5 टाइम्स अप टू 10 टाइम्स मोर करंट कंज्यूम करता है. सो दीज आर द बेसिक फिगर. इन द फिगर नंबर 1 द बेसिक कंस्ट्रक्शंस, जब ओवरलोडिंग कंडीशन हो जाता है तब हीटिंग एलिमेंट क्या होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा और द प्राइमरी बाई मेटल स्ट्रिप है वो डाउन जाएगी एंड द कॉन्टेक्टर विल बी ओपन. So these are the seen in the last lectures. So उसको प्रोटेक्शंस के लिए इसके लिए अलग अलग सेंसर यूज़ करते हैं. तो सम टाइम वी कैन यूज़ द रिले, बाई मेटल रिले, देन आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, देन इलेक्ट्रिक एलॉय, देन स्टैटिक रिले, देन थर्मिस्टर्स. सो इन द लास्ट लेक्चर्स thermostat also. So in the last lecture we can see there. Now today's topic is single phasing preventer and the large motor protections. So what is the single phasing preventer? So single phasing preventer is used to protect the induction motor from the single phasing fault, and the single phasing is very dangerous fault to electrical motor and which damage the motor stator winding rapidly. So when we consider for the 3-phase motor is running, if any one phase among the 3 phase open circuited, it is called the single phasing. Basically these are the actual model for the single phasing preventers. So single phasing preventers, if the one of the supply line is disconnected due to the open circuit or improper contact in switch, then the motor still continues to run and then the power is supplied to the remaining windings. So the current in the other phases increase to above the √3 times, and this is called the single phasing systems. So our questions is, what is the single phasing? So as discussions, you can see the basic connections for the single phasing. Actually this is the internal parts of the single phasing machines. So when their 3-phase motor is running, if any one phase is fail, at that time single phasing will be arise. So basically absence of the one phase among the 3 phase is called the single phasing. So we know that the 3-phase motor is more efficient than the single phase motor, and each 3-phase motor has either the star or either the delta connection. So if any one of the phase is open, they will continue to run, but
they will be drawn approximately 2.5 times the normal current during the single phasing conditions. यानी कि सिंगल फेजिंग में क्या होगा, जब एक फेज फेल हो जाता है तो उसकी वजह से करंट तो मोटर तो स्टार्ट ही रहेगी बट करंट मोर कंज्यूम करेगा ड्यू टू द सस्टेन दी करंट्स. सो वो एक्चुअली 2.5 टाइम्स नॉर्मल करंट से ज़्यादा होगा. सो इसके लिए हमको सिंगल फेजिंग की ज़रूरत रहती है. सो व्हाई वी नीड द सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर्स. सो सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर्स, यू मे थिंक दैट के मोटर will continue to run after the single phasing, then we require the single phasing preventers. So we need the single phasing preventer because after the single phasing motor will drawn the 2.5 times of the normal current, and so the motor winding may get the damage by the burn. यानी कि ज़्यादा करंट कंज्यूम करने से और लॉन्ग टाइम वो कंज्यूम करने की वजह से हमारे जो वाइंडिंग है वो बर्न हो जाता है और डैमेज हो जाता है. सो देयर मे बैड इफेक्ट ऑफ द सिंगल फेजिंग, सो वी नीड टू सिंगल फेज प्रिवेंटर्स. सो सिंगल फेज प्रिवेंटर्स इसलिए रिक्वायरमेंट रहती है. सो हाउ सिंगल फेज प्रिवेंटर वर्क्स. So basically the single phasing prevent works like the switch, but it automatically close the circuit in the normal conditions and open circuits in the fault conditions. That is the single phasing. For the better understanding, see the figures for the explanations. So you can see here, these are the basic concept. Here the one is the normally closed switch connected with the single phasing, then after the connected with the single phase preventers, then also connected on switch, and these are the connected with the magnetic contactors and connect to the three phase motors. So these are the basic circuit diagrams of the single phasing. So in the one diagram for the normal conditions and another diagram for the fault conditions. So voltage is sensing the single phase preventer and current is also sensing the phase preventers. Now we can discuss about the connections diagram. So you can see that the single phasing preventer, which is shown in the picture, have the 5 terminals. The 3 terminal is red, yellow and blue for the 3-phase system, and which to be connected to the motors, and after the contactor the remaining 2 gray terminal are common terminal of the relay and the normally closed terminal of the relay. As you see that the below connections diagram of the contactors having the rating the 230 volt, and the auxiliary supply of the 230 volt is given to the contactors. So now we can see the under normal conditions. In normal conditions, preventer act as the closed switch, therefore the contactor is connected to the 230 watt and the circuit closed so the motors. So these are the basic constructions in the figures. You can see here the 2 auxiliary supply is 230 is connected with the contactors coil, and the another will be connected with the single phase preventers, and then after you can see that RYB between the contactor closed circuit and connected with the phase motor, and the 3 phase is sensing with the single phase preventers. So these are the under the normal conditions. Now we can see that the under the fault condition system. So you can see here the R phase is in fault conditions
When the R phase get the disconnected or the single phasing occur, the preventer sense the fault and act as the open switch. Therefore the contactor not get supply, it break the circuit so that the motor will be stopped। यानी कि आप देख सकते हैं कि जब आर वाई बी में आर फेज फॉल्ट हो जाता है तब वो क्या होगा कि उसमें से करंट पास नहीं होगा, तो ऑक्सिलरी करंट जो ऑक्सिलरी सप्लाई है उसमें से चेंज हो जाएगा और सिंगल फेज प्रिवेंटर्स given the signals for the R phase in fault and the contactor will be open circuited। क्योंकि क्या हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज्ड है वो ओपन हो जाएगा, यानी कि जो कॉइल है वो एनर्जाइज हो जाएगी एंड द प्लंजर विल बी ओपन। सो दीज आर दी अंडर फॉल्ट कंडीशन सिस्टम्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द लार्ज मोटर प्रोटेक्शंस। So in the large motor protection, especially induction motor require the protections again physically. The first one is the motor bearing failures। यानी कि लार्ज मोटर प्रोटेक्शन मीन्स के जो जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है उसमें कौन कौन से प्रोटेक्शंस की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो कब होता है उसके बारे में हम पहले देखेंगे। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट रहती है मोटर बेरिंग फेलियर हो जाता है तो उसके प्रोटेक्शंस की रिक्वायरमेंट रहती है। देन आफ्टर द मोटर ओवर हीटिंग, देन आफ्टर मोटर वाइंडिंग फेलियर्स एंड रिवर्स मोटर रोटेशन। तो स्टार्टिंग करते हैं द मोटर बेरिंग फेलियर्स। सो इन द मोटर बेरिंग फेलियर्स द balls and roller bearing are used for the motor up to the 500 HP and beyond this size sleeves bearing are used. If the failure of the ball bearings usually cause of the motor to stand still very quickly, यानी कि due to sudden mechanical jamming in the motor bearing and the input current of the motor becomes very high, the difficulty can be overcome by providing the thermal overload relief। यानी कि अगर जब मैकेनिकल ब्लॉकिंग हो जाता है तब क्या होगा कि बेरिंग लॉक हो जाती है और ज़्यादा करंट कंज्यूम करने के लिए ये बेरिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो उसको रिड्यूस करने के लिए हम थर्मल ओवरलोड रिले यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं द फेलियर एंड द ball cage, then after the red dotted, you can see the red dotted lines indicate the beach mark lines at the several locations on the frame surface, and the figure correct the initial point and arrow the showing the propagation path, यानी कि जो propagation path होता है वो डैमेज हो जाता है। then after the डिसलॉन्ग द बेरिंग शीड, यानी कि जहाँ पे हम बेरिंग सेट करते हैं वो। सो यू कैन सी हियर्स द बेरिंग फेलियर स्टार्ट। सो 20% फॉल्ट इज अनसुटेबल लुब्रिकेंट, देन 20% इज एज्ड लुब्रिकेंट, यानी कि पुराना जो होता है। लेस देन 1% मटीरियल एंड द प्रोडक्शन फॉल्ट्स, देन 10% अनसुटेबल चॉइस ऑफ द बेरिंग, यानी कि जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे प्रॉपर बेरिंग यूज़ ना हो। तो जैसे कि अगर ज़्यादा रेटिंग है और हमने जो बेरिंग है वो स्मॉल लगाई या प्रॉपर कनेक्शंस नहीं हुआ, देन 5% को सीक्वेंस डैमेज, देन 5% माउंटिंग फॉल्ट, देन 5% लिक्विड कंटेंशंस, 20% सॉलिड कंटेनमेंट एंड 50% इनसफिशिएंट लुब्रिकेंट्स, यानी कि प्रॉपर लुब्रिकेंट ना हो तो। देन आफ्टर द मोटर ओवर हीटिंग। सो जब हम मोटर ओवर हीटिंग की बात करते हैं, द मेन रीज़न फॉर मोटर ओवर हीटिंग दैट मीन्स द ओवर हीटिंग ऑफ द मोटर वाइंडिंग एंड इज ड्यू टू आइदर ऑफ मैकेनिकल ओवरलोडिंग एंड रिड्यूस द सप्लाई वोल्टेज। सो अनबैलेंस सप्लाई वोल्टेज एंड सिंगल फेजिंग। The overheating may cause deterioration of the
insulation's life of the motor, hence it must be avoided by providing the proper motor protection schemes। यानी कि ओवर हीटिंग की वजह से जो इंसुलेशंस लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसको प्रॉपरली ओवर हीटिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट करना पड़ता है। सो द मोटर शुड ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड बाय द इंस्टेंटेनियस मोटर प्रोटेक्शन रिले अगेंस्ट द सिंगल फेजिंग सच एज द स्टेल ऑन लॉस ऑफ द फेज व्हेन रनिंग एट द फुल लोड एंड एंटेप्टिक start with the only the two phase winding। So you can see here the motor is too small the applications, यानी कि it is the important to make sure that the motor are using being properly sized for the application, यानी कि जो मोटर की जहाँ पे जितनी की रिक्वायरमेंट है मैंने जैसे बताया उतनी होनी चाहिए। then after the high ambient temperatures, यानी कि if the motor is running in a much warm environment then it was designed for it can overheated because the ambient temperature will make it more difficult for the motor to cool down the properly। then check the insulations class of your motors, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है वहाँ पे जो मोटर यूज़ होती है वो उस तरह से डिज़ाइन करनी पड़ती है कि अंदर का टेम्परेचर बहुत बढ़े नहीं, और क्योंकि उसको कूल करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता है या तो उसकी वजह से इंसुलेशन क्लास भी चेक करना पड़ता है। देन आफ्टर द रनिंग एंड द इंटरमीडिएट ड्यूटी मोटर कंटिन्यूअसली, so it is the important to run the motor that are rated for the immediate duty applications at or below their duty cycles। so in order to the motor to run at its rated performance pace it need to have the time to cool down completely between the cycles, यानी कि जो दो साइकिल्स है उसके बाद में पूरी तरह से कूल डाउन रहनी चाहिए। then after the high or low voltage supply, so high and low voltage the power supply may be insufficient due to the ampere drawn in order to overcome the load or inertia at the standing still the motor running current will be much too high under load and incorrect voltage supply will make the motor work harder and cold cause it the overheated। then after the high altitude, so motor cools less efficient at the high elevations due to the thinner air। so if you are at the higher evolutions, so above the sea level, the talk to the manufacturer and the make sure that your motor is rated accordingly। then after the block ventilation holes, so these may seem the obviously but the ventilation hole on your motor must be open to all allow the heat to escape। check and make the nothing block in the, यानी कि जो हवा है जो एग्जॉस्ट के लिए वो प्रॉपर है कि नहीं है वो चेक करना है। then after the winding failures, so the motor protections relay, so the motor protections relay should have the instantaneous trip of the element to the detect the motor winding failures such as to phase fault and phase to earth fault। यानी कि हम जानते हैं कि ओवर प्रोटेक्शन की वजह से फेस टू फेस फॉल्ट या फेस टू अर्थ फॉल्ट है तो वाइंडिंग फेल हो जाता है, तो प्रिफरेबल फेस टू फेस फॉल्ट until should be energized from the positive phase sequence component of the motor current and another instantaneous unit connected in the residual circuit of the current transformer। so you can see here when the first one is the winding shorted at that time face to face volt, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से होता है। then after the winding sorted turn to turn faults, then winding with short coils, then after the grounded in the sorted, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो
वाइंडिंग्स है वो तो बर्न होता ही है, पर अर्थिंग की वजह से, ग्राउंड की वजह से वो मेन स्टेनलेस स्टील को भी डैमेज कर देता है। देन आफ्टर द डैमेज बाय द वोल्टेज सर्ज, जब हाई करंट पासार होता है जैसे कि बिजली पड़ती है तब। देन आफ्टर द डैमेज द कॉजेज बाय लॉक्ड रोटर। लॉक रोटर आप जानते हो कि अगर स्टीटर एंड लॉकर लॉक हो जाता है तब ये वाइंडिंग की पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। एंड वाइंडिंग डैमेज ड्यू टू द ओवरलोडेड। एंड द लास्ट वन इज द शॉर्टेड कनेक्शंस। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से शॉर्टेड कनेक्शंस है। नाउ डिस्कस अबाउट द रिवर्स मोटर रोटेशंस। द स्पेशली इन केस ऑफ द conveyor belt and the reverse motor rotations must be avoided. The reverse rotations during the starting can cause due to the in advance reversing of the supply phase. So comprehensive motors protections relay with the instantaneous negative sequence until will sufficient this requirement. If such a relay has not been provided, the wattmeter type relay can be employed. So since each wires consist of the positive and negative current with the magnetic field, and the flip-flopping of main and starter wires cause the motor to run in the reverse rotations, and these easy switching of the wires work because the polarity of the magnetic field is reversed, thus reversing of the motor. So now the today's your worksheet questions is, what is the meaning by single phasing preventers, and your assignment questions is, what are the effect of single phase on the induction motor and which protections is used for protect the single phasing with the appropriate diagrams. So if any query regarding this topic you can contact me, and if any questions regarding this topic you can mail me. My mail ID and contact number is senior. Thank you.